So, what would you say to anybody who is battling cancer or any other illness right now? There's a beautiful poem by Faiz Ahmad Faiz. गर मुझे इसका यकीन हो कि तेरे दिल की थकन, तेरे आंसू की उदासी, तेरे सीने की जलन, मेरी दिलजोई मेरे प्यार से मिट जाएगी। यूं ही बैठा रहूं, गाता रहूं तेरी खातिर, पर मेरे गीत तेरे दुख का मदावा ही नहीं। You know? So whatever I say it can only be a balm. It cannot be the cure. There is no cure except नश्तर। और ये सफ़ाक मसीहा किसी जी रूह के कब्ज़े में नहीं, हाँ मगर तेरे सिवा, तेरे सिवा, तेरे सिवा। You are going to see yourself out of this, and you are going to heal, and you are going to understand cancer never wins. It never wins. Even if it takes you, you take it down as well with you. If it takes me, I take it down with me, you know. And I think everybody who has survived cancer is a warrior. Everybody who has died from cancer is a warrior. And I always remember when I was diagnosed, my friend Asma Nabil was diagnosed for the second time. We both went bald together, and she didn't make it, and I did. And that is his will. Birth and death is his will. So all I can say is that for every warrior out there who didn't make it, every warrior out there who does make it has a responsibility to talk about cancer and to talk about cancer awareness and to talk about how in Pakistan we need an ecosystem that helps cancer patients. I was very lucky. मैं तो वलायत में थी, वहाँ NHS था, तो NHS ने तो मुझे एक परियों की तरह लेके गया, एक रियासत मदीना थी वो, तो मुफ्त का इलाज। यहाँ पे इलाज इतना महंगा होता है, टेस्टिंग यूनिट्स नहीं होते, लोगों को अगर कैंसर हो भी जाता है तो वो घबराते हैं, फिर ट्रीटमेंट इतनी महंगी होती है। So there's no mental health support. There's no mental health support in Pakistan anyway for anyone, right? मुफ्त का तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है। Good mental health support is really expensive. So it is imperative that we create an ecosystem in Pakistan that supports cancer survivors, especially children. So true. And Nadia, you are an undisputed Twitter ki queen. Recently, you shared your Rukhsati ki story. Oh my God. I was binge watching Fairy Tale, okay? And I loved it. मैंने सोचा कि, you know, I was just reminded so much हलाकू के बारे में and all of these things, you know, and then I remembered my Rukhsati story. And it's one of my favorite stories. Because whenever I have to find, now people on Twitter want to see the video, I've got to locate the video. Because literally, I had told Ali कि अगर अबू रोने लग जाएं, अगर बाबा रोने लग गए तो मैं तो नहीं आ सकूँगी. And he was like, oh, and it was Abu's birthday as well. So he was so tense looking at Abu, alhamdulillah, mashallah, Allah bless him with the highest ranks of Jannah, didn't cry. अब I noticed कि परवेज़ अबू, मेरे जो फादर इन लॉ हैं, वो थक रहे हैं. तो मैंने कहा, okay, it's time to go. And I just got up and I started walking. He was, where are you going? I said, Rukhsati. And then पीछे से my khalas are running and saying Quran Sharif. And I'm saying, I don't need the ritual. Quran का साया मेरे दिल में है. I don't need this ritual. भाग रही है वो अंदर. Nani was in the bathroom. She didn't even know. I just kept walking. And the cameraman is running through bushes. You just see bushes and then you see my back. I'm like, bye. See you. And Ali कह रहा है जैसे आप मुझे गाड़ी तो लाने दो. And Ali whizzes past, huffing and puffing. And then he goes, I get to the gate. Obviously there's no car. Then he brings his car. And I had grabbed my sister-in-law's son, who was 1 year old, गोद में. मैंने कहा bye. I get to the car. Ali's like, बच्चा तो वापस कर दो. And I'm like, okay, bye. And I'm like, किसको बच्चा दूँ. मेरे बच्चा पकड़ाया किसी को. And फिर मामू का आवाज़ आई मामू के बीच में से कि अपनी सलामियों का बैग तो फेंको. और मैं ना जिस तरह रोबोट की तरह ने यूँ फेंका. और अम्मी जो इतना रो रही थी, सडनली अम्मी के आंसू रुक गए. सलामियाँ किसके पास है? नुस्सी just worried, where are the salamis?
And then my mamu again, very naughty, says, अपने सास के पाँव तो छुओ. Now my mother-in-law is very religious. And I went straight to my mother-in-law and she ran like this. नहीं, like this. I said, नहीं खाला, मैं आपको झप्पी मारने आ रही हूँ. मैं आपके पाँव नहीं छूने आ रही. मैं झप्पी मारने आ रही थी. And they, oh, it was so embarrassing. And Ali was like, please get into the car. Then I got into the car and I latkoed out, and I shared that picture as well. Bye, latki vi hu gaadi se. Bye, see you, Abbu, mwah, mwah, see you tomorrow. And then the minute the car turned the corner, I'm howling and crying, Abbu. And Ali says, "Khana khaya hai?" मैंने कहा नहीं. Burger khana hai? And I'm like, हाँ. And then he said, "Acha, take off your necklace and take off your earrings and put them in the dashboard." Of course, I'm like an idiot. I put them on the floor and they went under the car. So after we went to go for a burger and cold coffee, जहाँ हम अपनी पहली डेट के लिए भी गए थे. And Ali called his parents and said, मैं इसको लेके आ रहा हूँ. तो Ali's Abbu had apparently done the same thing. He had taken my mother-in-law for a drive right from the Rukhsati. So जब मैं पहुंची घर पे ससुराल रस्मों के लिए, तो मेरा हार ही ना मिला. मैं साड़ी में दुल्हन like a dog looking for the हार and the jhumkas, and then the rasams happened, and then all the rasams happened. गोद भराई, चावल, whatever, दूध फेंकना, and then we went to the room, and then it was 2-3 बजे. मैं कितनी हबड़-दबड़ में निकली थी, मैं सूटकेस ही नहीं लेके आई हुई थी. अब मेरे पास कपड़े नहीं, and everybody's locked the doors and gone to sleep. And I'm like, what am I going to do, Ali? So Ali's like, you just wear my achkan, wear my shadi ka achkan, and let's go to your parents' house and get your suitcase. So then we went back to get my suitcase, and then we came back home, and Ali went to the bathroom, and I just saw this big bed with flowers, and I'm like, I'm not getting into that bed. I'm not sleeping. And I had brought Bua back with me. Bua's my nanny. And so I went out to the छोटा सा एक हॉल में एक छोटा सा कमरा था साथ में, तो वहाँ में बुआ ना करके सो रही थी. एंड आई जस्ट कर्ल्ड अप विद बुआ एंड आई वेंट टू स्लीप. एक टांग ऊपर रख के, एक बाजू ऊपर रखे. सुबह 6 बजे ना बुआ जो उठी हैं, हाय 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 हाय, लड़की यहाँ क्या कर रही है, उठो उठो, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे. एंड आई वाज लाइक, बुआ कुछ नहीं होता, उठो उठो, निकलो, हाय हाय. एंड बाबू वाज बीटिंग हर चेस्ट. And then I went and creeped into the room where poor Ali was sleeping and crept into bed and put 3 pillows between us and went to sleep. Okay. Very romantic I was. Yeah. And then in the morning I got up in my Mickey Mouse pajamas and traipsed off. Ali was already out, and I went off into my mother-in-law's drawing room in my Mickey Mouse pajamas. Assalamu alaikum. Sat down and had chai with everyone, and then they were waiting कि ये कपड़े बदलेगी कभी बदलेगी कपड़े कि नहीं बदलेगी. मेरी एक बहुत अहम चीज़ थी. लोग मुझसे पूछते थे, आपके हस्बैंड आपको इजाज़त दे देते हैं? एंड आई वाज चौंक आउट द वर्ड इजाज़त. दैट यू नो माय फादर ऑलवेज टोल्ड मी कि तुम्हारी जो आज़ादी है वो एक अमानत है जो मैंने संभाल के तुम्हारे लिए तुम्हें दी है. रिस्पेक्ट इट. सो आई थिंक देयर जस्ट नीड्स टू बी ट्रस्ट दैट देयर विल बी सेल्फ रिस्पेक्ट. इंसान की अपने हाथों में होती है. तो बाकी नहीं, मेरे ख्याल में देयर वाज अ टाइम जहाँ पे करियर और बच्चों का एक वक्त था जहाँ आई कुड हैव ब्रांच्ड इनटू बॉलीवुड. एंड आई हैड अ फ्रेंडशिप विद द चोपड़ा फैमिली. यश अंकल आई वाज वेरी क्लोज टू एंड फ्रेंडली विद. एंड या आई कुड हैव टेकन दैट सीरियसली एंड आई कुड हैव परसूड दैट. वो मुझे कहते थे हमेशा कि तुम अपना करियर ख़राब कर रही हो, क्योंकि आई वाज नॉट टेकिंग इट सीरियसली. आई वाज ऑब्सेस्ड विद माई सन. I just wanted to be 24 hours with him and feed him, and it was so I was very hands-on, and if I had to do it again I would do it again, because my Rakesh's birth anchored me. I was a wild child before he was born, and his birth anchored me and gave me an identity, one that Nadia Jamil had no idea of who she was before she became a mother. And then suddenly I was a mother. Because before that, I did not know who I was or what I was. I wasn't connected enough in my faith to say I was a good Muslim. I always felt I'm cheating Allah. I wasn't connected enough in my acting to think I was an actor. I wasn't connected enough as a teacher. Nothing. It was when I was a mother that I identified. And my boys have both been anchors and teachers. And now my daughter is
another little mentor for me. You've also been very selective about your projects. What's the reason behind that? One is privilege. I didn't have to work for money. I think it is a place of privilege that you can choose your own work. I wanted to identify with work that speaks to me and means something to me. Roles that excite me, work with directors who excite me, co-stars that excite me. And yeah, I think that's it. And the most favorite role that you've done? Oh my God, there are too many. In TV, I love Mere Paas Paas. It's my favorite play. I really want Momna to put it up on air now. Behad, I loved. Kali Shalwar, I loved. But I think my top favorite on TV would be Mere Paas Paas. I loved working with Haitham on Jo Bichhad Gaye. I think Shabnam. Actually, I think my favorite role is Shabnam because that's the only time I think I'm acting well in Shabnam. So Haitham really got a performance out of me there. And I think Taming of the Shrew at the Globe Theatre. Nothing can top that. Actually, one thing can top that. My favorite performance to date was Antigone with Shoaib Hashmi, directed with Naveed Shahzad. I'll never forget it. And what do you think about the industry? Abhi, jaise where it is right now, what do you think? I think the industry is in a good place. There's a lot of good work going on. I think that there's we're learning about how to be more responsible. There isn't a concept of safeguarding in Pakistan, safeguarding children, safeguarding people's interests, respecting people's interests. So I think that it's important that we learn how to safeguard children, incidents like this hadsa इंसिडेंट जिसमें इफ़ इन पाकिस्तान एक ही केस हुआ है जिसमें खातून अपने बच्चों के सामने रेप हुई हैं, तो जब आप वो टीवी पे दिखाएंगे किसी सीरियल में तो ज़ाहिरी बात है जब सबको पता है कि एक ही खातून है जो अपने बच्चों के सामने रेप हुई हैं तो लोग उसी खातून को तंग करेंगे और उसी खातून के वो ज़ख़म खुरेदेंगे दोबारा से. It's really important to be sensitive about these things. Also, it's very important about the language we use. And I understand ये जो लफ्ज़ है हम रेप के जो इस्तेमाल करते हैं उर्दू में इज़्ज़त लुट जाना, ये बड़ा क्योंकि दरअसल जो इंसान रेप हुआ है, मैं रेप हुई थी, मेरी तो इज़्ज़त नहीं लुटी. मैं इंतहाई इज़्ज़तदार औरत हूँ और मुझे अपनी इज़्ज़त पे फ़ख्र है और अपने आप पे फ़ख्र है. तो हम ये क्यों कहते हैं कि इज़्ज़त लुट गई. और ये एक जो लाइन थी इस ड्रामे में जिससे मुझे बहुत तकलीफ़ हुई वो ये थी कि जिस तरह मुर्दे में रूह नहीं वापस आ सकती है, वो ज़िंदा नहीं हो सकता, उस तरह इज़्ज़त एक बार लुट गई तो वापस नहीं आ सकती. नहीं, ये आप गलत बात कर रहे हैं क्योंकि पहले एक औरत जो रेप हुई है उसको इतनी तकलीफ़ होती है जिस्मानी तौर पे और रूहानी तौर पे, जज्बाती तौर पे, नफ्सियाती तौर पे, वो इतने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से टूटती है कि ऊपर से ये उस पर मुलव्वस कर देना कि ये ज़िल्लत और शर्म भी आपका बोझ है, आप उठाएं, हुआ भी आपके साथ है, इस ज़िल्लत और शर्म का भी बोझ आप उठाएं. ये हमारी ज़ुबान में है इज़्ज़त लुट जाना. तो हमने अपनी ज़ुबान बदलनी है क्योंकि ज़ुबान जो होती है ना, अल्फाज जो होते हैं, अल्फाज से लोगों के बिलीफ सिस्टम्स बनते हैं. आपका जो दीन है, आपका जो दिमाग के जो आइडियल्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो आपके अल्फाजों से बनते हैं. आपके दिमाग में एक ख़याल नहीं है जो अल्फाजों के बग़ैर नहीं आता. हम पहले ला इलाहा पढ़ते हैं, उसके बाद एक बिलीफ सिस्टम बनती है कि मुसलमान हैं, उस बिलीफ सिस्टम से फिर एक्शंस ट्रिगर होते हैं कि हमने नमाज़ पढ़नी है, उस एक्शन से एक आइडेंटिटी पैदा होती है कि एक मुसलमान औरत हूँ मैं. उसी तरह अगर आप ये अल्फाज टीवी पे बार बार दिखाएंगे कि इज़्ज़त लुट गई और इज़्ज़त वापस ही नहीं आएगी, वो एक बिलीफ सिस्टम आप बाहर निकाल रहे हैं और वो भी सर्वाइवर के मुंह से. यू कैन act that your self-respect feels compromised, act that you feel compromised, but don't put those words out there. There was a time where in America you could not, लोग अफ्रीकन अमेरिकन्स के ख़िलाफ़, ब्लैक अमेरिकन्स के ख़िलाफ़ रेशल स्लर्स इस्तेमाल करते थे. एक बहुत गंदा वर्ड है, एन वर्ड.
तो बस अफ़ारौज़ुबिल्लाह, लेकिन today you can't use that word. If you use that word today in the West, it is a violation and you are arrested for racism. Similarly, this particular sentence के इज्जत लुट जाना और वापस ना आ सके, it's a violation. It's a violation of ethics. It's a violation of a woman's sanctity and a woman's honor and respect. And another important thing is to understand that ये मेरी माँ है, ये मेरी इज्जत है. नहीं, मैं किसी और की इज्जत नहीं हूँ, मैं किसी मर्द की इज्जत नहीं हूँ. ये मर्दों ने जो कह दिया ना कि औरत के जिस्म में उनकी इज्जत कहीं ना कहीं वो स्टैम्प हुई हुई है, ये बुलशिट है, ये गलत बात है. ये गलत बात है. तो अगर मेरा दुपट्टा खिसक गया तो जी मेरे बाप की या बेटे की इज्जत ख़राब हो जाएगी. क्यों? तुम्हारी शर्ट खिसक गई, तुम्हारी माँ बहन की इज्जत नहीं ख़राब होती. तो इतना जो आप औरत के जिस्म को बना देते हैं ना, एक बाज़ार बना देते हैं इस तरह कि ये मेरी चीज़ है, ये गाड़ी मेरी है, मैं चलाऊँगी, ये BMW है, ये ऑडी है, ये मर्सिडीज़ है. ये आपने जिस तरह हम औरतों के बारे में और बच्चों के बारे में भी यूँ ही बात करते हैं और हमें फिर अपना हक जताते हैं. फिर आदमी को हक एक मिलता है कि मैं अपनी चीज़ पे हाथ उठा लूँ. माँ और बाप को एक अंदर उनके एक हक महसूस होता है कि मुझे हक है मैं अपने बच्चे के मुँह पर चपेट मार दूँ, थप्पड़ मार दूँ, गाली दे दूँ, बच्चे को बुरा भला कहूँ ताकि उसका इतना सा दिल हो जाए. ये हक, ये जो सेल्फ एंटाइटलमेंट है, ये नहीं है. हर एक इंसान की इज़्ज़त करना, चाहे वो छोटा है बड़ा है, ये आपका फ़र्ज़ है. और आपका हक सिर्फ यही है कि आप वही इज़्ज़त वापस अपने लिए मांगें. और किसी औरत के जिस्म में आप अपनी इज़्ज़त ना ढूंढें, क्योंकि इसी तरह फिर जब दुश्मनियाँ होती हैं तो जब दुश्मन फिर औरत को ही उठाता है कि उसकी चीज़ है, उसकी इज़्ज़त को मैं तबाह करूँगा. बेशक, it becomes like that. Coming back, who is your current favorite actor and actress? Oh, there's so many. I'm so excited. Aajkal, I mean, obviously, in my generation, I loved, before my generation, Khalda Riyasat ji, Shana Sheikh ji, Asif Raza Mir ji, huge fans of theirs. I love Babra Sharif, a huge fan of hers. Then Sania Said, obviously, she's magnificent. Samia Mumtaz, Numan Ijaz, everybody. I love all of my generation. I love Humayun. Humayun is amazing. He does this particular kind of acting. Fawad is brilliant. Wahaj is brilliant. In the girls, so many young people are doing so well now. Ikra is fantastic. Sajil is fantastic. I always say that there's no great actor or actress. There are only great performances and bad performances. All of us have given bad performances and all of us are capable of giving a good one. And when do we get to see Nadia Jamil on screen? Soon. So I'm working in 2 MD production, Momna Dured production serials, and I'm excited. And then I'm wanting to do something for stage as well now. So I'm excited about that. And I want to write a story for children with a writer. And I'm excited about that. I think acting is big on my acting and production, directing. They're all big on my cards, and in the future and in the present. And children, the children I work with. So as a life coach, I work with the children of Punjab at the bureaus, and I want to be an advocate for children's rights and an advocate for child protection system. Because we are 76 years old. And our child protection system is 0 years old, Anda. And we need to stop looking for heroes and voting for heroes and start voting for systems and start thinking practically about this country. Because honestly, who doesn't matter who was in power, nobody even began to initiate a child protection system. I think the only person who I've seen work in the government for children the way she does is Sara Ahmed of the Child Protection Bureau. She's unbelievable. And there are other people like Rabia Asfar Nizami and now the National Commission
for the rights of children is also becoming stronger. So I mean, Aisha Farooq वगैरह के साथ, it's interesting, things are taking a turn. I think children's rights are becoming something important. Unfortunately, we've had to see some really ugly things in our country to raise this voice. And I fear that we will continue to see these things. अभी recently अभी एक PMLQ के मिनिस्टर के घर से 3 बच्चे बरामद हुए हैं जो कि बेड़ियों से बांधे हुए थे और टॉर्चर हुए हुए थे. तो बच्चों के साथ बदसलूकी करना आम फहम है. अगर बच्चे से घर में काम करवाना गैर आइनी है, गैर कानूनी है, और आप अपने आप को ये दिलासा ना दें कि आप कोई मेहरबानी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो गरीब अवाम है ना, वो मेहनत करके पसीने पजो के लिटरली 3-3, 4-4, 6-6 नौकरियां करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं. लेकिन एक और किस्म का इंसान है जो बच्चे पैदा ही इसलिए करता है कि वो ज़रिया आमदनी हो, और फिर बीच में वो चाइल्ड ट्रैफिकर्स आ जाते हैं जो उस पेरेंट जो बच्चों को पैदा कर रहे हैं काम करवाने के लिए, और वो एम्प्लॉयर जो चीप लेबर के तहत बच्चों को ग़ुलामी के लिए अपने घरों में बुला रहे हैं, और बीच में चाइल्ड ट्रैफिकर है. और ये जो साइकिल है ना, ये जो बिज़नेस मॉडल है कि हम बच्चों को इस्तेमाल करें पैसे बनाने के लिए, ये आप स्टॉप करें. बाहर के मुल्कों में अगर आप इस तरह का आप ये बहाना नहीं लगा सकते गुर्बत इतनी है तो, क्योंकि जज आपसे कहेगा अगर आपके पास इतनी आमदनी नहीं थी कि आप अपने बच्चों को खाएं पिलाएं तो आपने 10 बच्चे पैदा क्यों किए, सीधी तरह आप जेल में होंगे. ये बहाना नहीं चलेगा, गुर्बत का बहाना नहीं चलेगा. पाकिस्तान की गुर्बत का ठेका बच्चों ने नहीं उठाया हुआ. तो मेरी सलाह है तमाम वालिदैन को अपने बच्चों को ज़रिया आमदनी ना बनाएं. और मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि जो इतनी फलाई फ़ंड्स होते हैं, बेनज़ीर फ़ंड है, एहसास फ़ंड है, फ़लाँ फ़ंड है, इतने अरब रुपए हम खर्चते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों पे, आप वो तमाम चीज़ें बच्चों की पढ़ाई पे खर्चें, और गरीब आदमी को वो एक मोटिवेशन दें कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजे, ताकि जब कल के दिन वो बच्चा कोई हुनर सीखेगा, कारपेंट्री सीखेगा, सोइंग सीखेगा, बाल कटाना सीखेगा, नर्सिंग सीखेगा, कुछ भी सीख जाएगा, ड्राइविंग सीखेगा, तो वो एक जो गुर्बत का एक सर्कल है ना, बिल्कुल है, वो आप तोड़ सकेंगे. तो आई थिंक बड़ा ज़रूरी है कि मैं एक बात, ये जो लोग अपने आप को थप्पी देते हैं कि हम तो अच्छा खाना भी देते हैं, अपने बच्चों के खिलौने भी देते हैं, उस बच्चे का हक है कि वो आपके बच्चों की तरह स्कूल में हो. 3,000 रुपये महीना, और कई स्कूल्स मुफ्त भी हैं. आपका क्या जाएगा, इतने पैसे हैं आपके पास, आप इसको स्कूल में डाल दें ताकि इसकी बाकी में ज़िंदगी बन सके. Nadia, it's been lovely talking to you. To wrap this up, I would want you to describe what the word mindful means to you. The word mindful, I have a tattoo here saying nafs, mind. And it's to remind me to be mindful, to remind me that when I look at someone, to look them in the eye and talk to them, to honor them. When I eat something, to slow down and honor the bite that I'm enjoying in my mouth and the nemat that has been bestowed upon me. When the sun rises, to honor the sunlight. When a bird sings, to honor that bird singing. When I'm in the presence of beautiful trees like I was outside here, to honor those trees. I think being mindful means to honor Allah in everything, and to honor and keep yourself grounded in the present moment, which is the most beautiful moment and which is the only real moment. जो हो गया वो ख़त्म, जो आना है शायद कभी आए ना, यही एक पल है जो हकीकत है. और इसी हकीकत में इस वक्त मेरी पूरी ज़िंदगी है, और मेरा सारा माइंड है, और मेरा नफ्स है, और मैं हूँ आपके साथ. तो आई थिंक टू बी माइंडफुल फॉर मी it's the only way to live. Because everything you will experience in your life, from your food to your relationships to yourself, is through the lens of your mind. So keeping your mind grounded and real and pure and full of love and light and positivity is your job.